Hello children, welcome again to your maths class with Poonam Bagga in yet another segment from chapter 11 Mensuration from class 8th maths. Now after learning how to find the area of a quadrilateral or a polygon, today we will be discussing what is meant by the surface area of a solid, and in particular we will be discussing how to find the surface area of a cuboid, cube and cylinder. We begin with the very basic term, what is meant by a solid shape. We know that objects that are three-dimensional, that have three dimensions, length, breadth and height, such objects are known as solid shapes, and these solid shapes occupy some space. We know that cubes, cuboids and cylinders are solid shapes. We have learnt about them in our previous chapter, and today we will be learning how to find their surface area. But actually, what is meant by the surface area of a solid? The surface area of a solid is the sum of the areas of its faces. To understand this, let us take one box. Let this be one box. Now, if I ask you to paint this box, you will be actually painting all the faces of this box. To be precise, you will be painting the area covered by each face of this box. And to be more precise, you will be painting the surface area of this box, because the surface area of a solid is the sum of the areas of all its faces. जब हम सभी faces को एक साथ consider करेंगे, उन सभी faces का area एक साथ लेंगे, तो हम actually mean कर रहे हैं उस solid के surface area से. We actually mean the surface area of a solid is the sum of the areas of all its faces. तो जब आप इसे पेंट कर रहे हैं तो इसके सभी फेसेस को पेंट कर रहे हैं, एक्चुअली आप सभी फेसेस के एरिया को पेंट कर रहे हैं, या कह लीजिए कि आप इस बॉक्स के सरफेस एरिया पर कलर लगा रहे हैं. सो इन दिस वे आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर व्हाट इज मेंट बाय द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड. नाउ द सरफेस एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स. इफ वी टेक the length of each side of this box in say meters, then the unit for the surface area will be meter square. In square units we write it either in this way or we write it as square meters. In this way we write the unit of the surface area of an object. In the case where we take the sides in centimeters, then the surface area it will be written as centimeter square, or we write square centimeter. So these are the units for surface area. Remember, surface area is measured in square units. Now this surface area of an object, it can be divided into lateral or curved surface area, or we may take the total surface area. What is meant by the lateral or curved surface area of an object? Surface area without the top and base area, it is called the lateral surface area. जब हम top और bottom faces का area consider नहीं करते हैं, सिर्फ हम चारों तरफ का area consider करते हैं, we don't take the top and the bottom, then such surface area is known as the lateral surface area, and we also call it as the curved surface area in case of curved objects. Then what is meant by the total surface area? जब हम सभी faces का area लें, top और bottom भी include करें और चारों तरफ का area भी लें, हम चारों तरफ के जो faces हैं उनका भी area लें, तब हम उस surface area को कहेंगे total surface area. Sum of the areas of all faces including the top and base area. तो यहाँ पर हम top और base नहीं लेंगे lateral surface area के केस में, या कह लीजिए curved surface area के केस में, लेकिन टोटल सरफेस एरिया के केस में हम टॉप और बॉटम सरफेस के भी एरियाज लेंगे और साथ ही साथ हम चारों तरफ का एरिया भी लेंगे, चारों तरफ के जो फेस हैं उनका भी एरिया लेंगे और टॉप और बॉटम फेसेस का एरिया भी लेंगे. क्लियर? नेक्स्ट वी टेक द फर्स्ट शेप विच इज आर क्यूबॉइड. A solid bounded by 6 rectangular plane faces is called a cuboid. You are very much familiar with this. You can take your pencil box in your hands, or you may take your lunch box also in your hands. If you have it cuboidal in shape, then you can always match it with this figure. A cuboid has 6 rectangular plane faces. 6 rectangular faces होते हैं cuboid के. You can see, and the line segment along which two faces meet each other, this line segment is known as the edge, and the point where three faces meet together, it is known as the vertex of the cuboid. And so we have 6 faces
12 edges and 8 vertices in a cuboid. We are very much familiar with this shape. Now we can visualize here that in case of a cuboid, all 6 faces are rectangular and opposite faces are identical. So there are 3 pairs of identical faces. आप देख सकते हैं ये क्यूबॉइड है और अगर हम इनके फेसेस को अलग अलग करें तो आप देखेंगे कि ये टॉप फेस और ये यहाँ से बॉटम फेस ये आइडेंटिकल है. दिस वन एंड दिस वन. These two are identical faces, the top one and the bottom one. Then you will see this left one and this right one. You can imagine it is from here, taken from here, and so these left and right faces, they are also identical. And similarly you can see this front one and this at the back, this one. These two faces which is separated here, you can see these two faces, one in the front and the other at the back. These faces are again identical. Identical means exactly same. तो आप देख सकते हैं एक क्यूबॉइड में टॉप और बॉटम फेस exactly same होते हैं. ऐसे ही लेफ्ट एंड राइट फेसेस they are exactly same. और ऐसे ही फ्रंट एंड बैक फेसेस these are exactly same. और सभी फेसेस कैसे होते हैं? Rectangular in shape. And opposite faces are identical, and so there are 3 pairs of identical faces. Now we want to find the surface area of a cuboid. We move here. Consider a cuboid of length, breadth and height as L, B and H respectively. ये एक cuboid ले रहे हैं हम जिसकी length है L units, breadth है B units और height है H units. If we now cut this cuboid along one of the edges vertically and then we cut along the edges at the top and the bottom, then we get this network of this cuboid. अगर हम इस तरह से कट करें तो इसके सभी फेसेस ओपन अप होके इस तरह से आपको दिखाई देंगे. इस क्यूबॉइड की सभी फेसेस हैं और आप देख सकते हैं देयर आर 6 फेसेस 1, 2, 3, 4, 5 and 6. All these are rectangular in shape. Now we are interested to find the total surface area of a cuboid. We write it here. Total surface area of cuboid. How we will find it? It is the sum of the area of all its faces. तो यहाँ पर जितने faces हैं 6 faces हैं सभी का area लेंगे और उनका sum कर लेंगे. तो चलते हैं हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं area of first figure plus area of second figure plus then we will take area of third figure plus area of fourth figure plus here we will take area of fifth face plus area of sixth face. So here we are taking the areas of all these 6 faces. Now how to find the area of the first face? ये है first face. तो आप यहाँ देख रहे हैं this is the length and this is the height. तो हम area कैसे find out करते हैं rectangular face का? We multiply the length and breadth. In this case the breadth is nothing but the height of this cuboid. So this one will be length into height. So we write here length into height. So area of the first face length into height. I hope it's clear. Plus then we will take area of the second face. Second face पर देखिए this one length into breadth. So it is nothing but L into B. So here we write L into B. Plus now area of the third face. Just have a look. Here we have B and here we have this one as H. So this is nothing but B into H. So we write here B into H. Plus now area of the fourth face. ये है fourth face. Here you can see this is again your length and this is your height. So again it is L into H. So we write here L into H. Plus here we have the area of the fifth face. This one. This is B and this is H. So B into H. Area of the fifth face. So we write here B into H. Plus now area of the sixth face. It is L into B. So we write here LB. L into B. So now you can see here that these two faces are identical. First and fourth. ये identical faces हैं. इनका area same है. Length into height. इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये second और यहाँ से sixth ये faces
आइडेंटिकल हैं, इनका एरिया सेम है, लेंथ इनटू ब्रेथ. एंड देन यू कैन सी हियर दिस थर्ड फेस एंड फिफ्थ फेस, दीज आर आइडेंटिकल. दोनों का एरिया है ब्रेथ इंटू हाइट, b इंटू h. In this way we are getting 3 pairs of identical faces. और अब जब हम यहाँ पर इनका एरिया एड अप करेंगे, let me make some space here. This will now be equal to, just have a look, length into height, this is coming up 2 times. Then length into breadth, this is also coming up 2 times. And b into h, it is also coming up 2 times. क्योंकि यहाँ पर हमारे 3 pairs हैं जो faces के identical हैं. So here we can take, as we are getting 3 pairs, so we can take 2 outside, and instead of writing them 2 times, we will write them 1 time and take out this 2 outside as the common factor. तो L into H ये हो गया 2 times, so we have written 2 outside. Then we have B into H 2 times. Then we have L into B 2 times. ये तीनों प्रोडक्ट्स 2 टाइम्स आ रहे हैं, तो तीनों को 2 टाइम्स लिखने की बजाय हमने एक ही बार लिख दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. इसको और बेहतर ढंग से लिखेंगे आप, तो यू विल गेट 2 इंटू, दिस वन कैन बी रिटन एज एल बी, एल इंटू बी इज एल बी, दिस वन कैन बी रिटन एज बी इंटू एच, एंड प्लस वी हैव L into H, or we can write it as H into L. And now this gives us the surface area of a cuboid, the total surface area. Let me indicate it here. This one. This gives us the total surface area of a cuboid, 2 into LB plus BH plus HL, where L denotes the length, B denotes the breadth, and H denotes the height of a cuboid. I hope it is very much clear. Next we take up lateral surface area of a cuboid. What do we mean by the lateral surface area? The side walls, the faces excluding the top and bottom. Top और bottom को नहीं लेना है, सिर्फ side walls को लेना है. Make the lateral surface area of the cuboid. And now how to find the lateral surface area? Lateral surface area of cuboid, here in this case you can see we will be finding area of the first face, ये लेंगे हम, plus now will we take the area of the second face. क्या हम second और sixth face consider करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये हो गए top और bottom faces, तो इनको अब हम lateral surface area के केस में consider नहीं करेंगे. So here we will add up area first, then area third, then area fourth, and then area fifth. We will not consider the second and sixth faces because these are the top and the bottom faces, and in case of lateral surface area we only consider the side walls, we exclude the top and the bottom faces. इनको हम नहीं लेते हैं. ठीक है, क्लियर है. अब फर्स्ट फेस का एरिया देखिए, इट इज लेंथ इंटू हाइट, L into H. So we write here area of the first face L into H, plus here third face it is B here, and this is H, so B into H you can relate here, B into H, plus here this one fourth face, this is L and this is H, so again it is L into H. We write here L into H, plus this fifth face, this is B and this is H, you can see, so again it is B into H, so B into H. Now again you can see we have 2 times LH plus 2 times BH. Again we can take 2 outside as the common, and so we have LH plus BH. Again you can take this H outside as the common factor. H भी common है दोनों ही products में, तो हम 2 into L plus B यहीं लेते हैं और H को हम ले लेते हैं बाहर as the common factor. तो H बाहर चला गया यहाँ से L और H बाहर चला गया यहाँ से B. And now this gives us the lateral surface area of a cuboid. This is an important formula. यहाँ हमने जब total surface area find out किया था,
Here also you can relate this one. We were having 2 times L into H plus here we were having 2 times B into H plus 2 times L into B. देखिए आप L into H 2 times था 1 and 2. Then we were having 2 times B into H 2 times L into B. तो तभी हमने यहाँ लिखा और 2 को बाहर ले लिया था, कॉमन फैक्टर आउटसाइड, और फिर हमने यहाँ पर अंदर इनको एक एक बार लिया, 2 को बाहर कॉमन लेने पर 2 इंटू एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी, और फिर आपको ये फॉर्मूला मिल रहा है टोटल सरफेस एरिया का, जहाँ पर हम सभी फेसेस कंसिडर कर रहे हैं, ऑल द साइड वॉल्स और द साइड फेसेस प्लस द टॉप फेस एंड द बॉटम फेस. लेकिन लैटरल सरफेस एरिया के केस में हम सिर्फ चारों साइड फेसेस कंसिडर कर रहे हैं, टॉप और बॉटम को नहीं ले रहे हैं. सो नाउ वी कैन राइट हियर that the surface area of a cuboid, here we consider total surface area of a cuboid, it is given by 2 into LB plus BH plus HL. Remember this formula, how we got this, you have understood, I expect this from you. And then lateral surface area of a cuboid, it is given by 2 into L plus B into H. ये है आपका 2 into L plus B into H lateral surface area, and this shows the total surface area of a cuboid. Now we have some important things to note. What is it? The lateral surface area of a cuboidal room, it is equal to the total area of 4 walls of the room. Now the room in which you sit, in the classroom, in the room of your home, you sit in a room, and by the lateral surface area of a cuboidal room, we actually mean the total area of the 4 walls of the room. Here we don't consider the area of the roof and we don't consider the area of the floor. जब हम रूम की बात कर रहे हैं तो हम उसकी चारों तरफ की वॉल्स का एरिया ही कंसिडर करते हैं लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ रूम के केस में. तब हम ना तो उसकी रूफ का एरिया कंसिडर करते हैं और ना ही हम उसके फ्लोर का एरिया कंसिडर करते हैं. तो जब हम किसी रूम की बात करेंगे या हॉल की बात करेंगे, आगे चल के जो क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें जब लैटरल सरफेस एरिया की बात होगी तो तब हम लेंगे एरिया ऑफ द 4 वॉल्स. गेटिंग इट? नेक्स्ट, lateral surface area of a cuboid, it is equal to perimeter of the base into the height. Now what is the formula to find the lateral surface area of a cuboid? It is given by 2 into L plus B into H. And what is meant by 2 into L plus B? It is nothing but the perimeter of a rectangle. Which rectangle? It is the perimeter of the base rectangle. जब हम एक cuboid consider करते हैं, we draw one cuboid here in this way. जब हम एक cuboid consider कर रहे हैं तो ये जो bottom face है, this one, इसका जो perimeter है वो हम ले रहे हैं 2 into L plus B, इसका perimeter, and then we multiply it by the height. In this way we get the lateral surface area of a cuboid. तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको लेंथ और ब्रेड्थ की मेजरमेंट्स अलग अलग सेपरेटली नहीं दी गई हैं और आपको पेरीमीटर दिया गया है बेस फेस का, तब आपसे लैटरल सरफेस एरिया अगर पूछा जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट. पेरीमीटर ऑफ द बेस, दिस पेरीमीटर, द आउटलाइन, this pink one as we have shaded, the pink one, perimeter of the base into the height. I hope it's clear. Then we have total surface area of a cuboid. It is equal to lateral surface area plus 2 times the area of base. जब हम बात कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया की तो इसका मतलब है हम सभी फेसेस का एरिया ले रहे हैं. तो हम यहाँ पर चारों साइड वॉल्स या साइड फेसेस का भी एरिया ले रहे हैं जिसे हम कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया. और जो हमारा टॉप और बॉटम है वो तो आइडेंटिकल है, तो हम लिख सकते हैं 2 times the area of the top और 2 times the area of the base. तो जब हम 6 फेसेस ले रहे हैं तो लैटरल सरफेस एरिया के केस में तो हमें 4 वॉल्स या 4 फेसेस मिल गए चारों तरफ के, और 2 times एरिया ऑफ बेस से हमें एरिया ऑफ बेस भी मिल गया और एरिया ऑफ टॉप भी मिल गया, क्योंकि हम 2 times कर रहे हैं और ये बेस और टॉप दोनों आइडेंटिकल हैं. तो इस तरह से हम टोटल सरफेस एरिया को इस फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं. इट इज़ द सम ऑफ द लैटरल सरफेस एरिया एंड 2 times द एरिया ऑफ द बेस. आई होप इट्स क्लियर. चारों तरफ की फेसेस हैं उनका एरिया प्लस द टॉप फेस प्लस द बॉटम फेस, या कह लीजिए द लैटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ द 4 फेसेस along the side plus
2 times the area of the base because the top and the base are identical. Now here we pause and do one question. Find the total and lateral surface area of the following cuboid. We have this cuboid. We will be now finding the total surface area and the lateral surface area. Pause the video and try to do this question. I am doing till then here. The total surface area. It will be given by, we know the formula now very well, 2 into LB plus BH plus HL. Now this will be 2 into LB. L is 6 centimeter and B is 4 centimeter. So 6 into 4 plus BH. B is 4 and H is 2. So 4 into 2 plus H into L. H is 2 centimeters and L is 6. So 2 into 6. Getting it? Easy है, connect कर लीजिए figure से. And now this will be equal to 2 into 6 4s are 24 plus 4 2s are 8 plus 2 6s are 12. This will now be equal to 2 into, add these 3 numbers, 12 and 8 it's 20, and this will be 44. This will be 88. And now what will be the unit? Yes, it will be centimeter square. Square units, remember every time. Now we have also to find the lateral surface area. What is the formula for finding the lateral surface area? This we have done the first part. Now we will be doing the second part. Lateral surface area. We can also denote it in short as LSA. This will be given by, yes, come up with the formula, 2 into L plus B into H. Now this will be equal to 2 into L plus B, 6 plus 4 into H, which is 2 centimeters. So this will be 2 into 10 into 2, that is 40 centimeter square. And so with this we have done this question. I hope now the formula is clear. How we derived this formula, it is also clear, and how to apply this formula, now it is also very much clear. We now take the next shape, and it is our cube. A cuboid whose length, breadth and height are all equal is called a cube. आप देखिए लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट तीनों ही एग्जैक्टली इक्वल होते हैं. सब तरफ से ये बिल्कुल सेम फेसेस होते हैं इस क्यूब में, और हम कहते हैं इट इज़ अ क्यूब. व्हाट वी हैव द एग्जांपल्स, आइस क्यूब्स, sugar cubes, dice, etc. all examples of a cube. And what is special about a cube? All its faces are squares in shape. इनके सभी faces square shape के होते हैं, जबकि cuboid में सभी faces rectangular shape के थे और cube में सभी faces square shape के हैं, क्योंकि यहाँ पर length, breadth और height तीनों ही exactly equal है. We can visualize here, this is a cube. Here you can see this is the top face and this is the base face. Then here we have this one and this one as the identical faces. Actually all the faces are identical because all are squares of same length and same side. So here we can say that all these faces are identical. ये है आपका front face, ये हो गया आपका back face, top and bottom, and this one is the left one and this one is the right one. You can relate it from here. ये है आपका cube, सब तरफ से identical. We have all 6 faces are squares and identical. So I hope this shape is very much clear to you. Now we will take up its surface area. First we will deal with the total surface area. We are considering one cube of side L. You can see this is one cube, and now after cutting along one of its edges and in such a way we get the net. We call it as the net of this cube. तो इस तरह से आपको सभी 6 faces यहाँ पर visible हो रहे हैं. These are the 6 faces, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, and all these faces are square in shape, you can see, and the side is L units as shown here. Now we have to find the total surface area, and this will be equal to sum of areas of all the faces. तो सभी faces का area लेंगे और उनका sum लेंगे. तो अब यहाँ पर एक एक करके सभी faces का area बताइए क्या होगा. ये है L, ये है L, and area of a square is side square, so it will be L into L equal to L square. इसी तरह से second face में भी
साइड वही है L यूनिट्स, तो इट विल बी L स्क्वायर, इट विल अगेन बी L स्क्वायर द एरिया, ईच फेस विल हैव द एरिया L स्क्वायर. और अब आप इन सबको एडअप करिए, कितने टाइम्स आ रहा है L स्क्वायर? इट इज कमिंग अप 6 टाइम्स. लेट मी मेक सम स्पेस. So it will now be equal to L square plus L square plus L square plus L square, L square and L square. Since there are 6 faces, we have L square 6 times, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and it is not convenient to write these squares 6 times. So we will be writing it as 6L square. Multiply it by 6. तो 6L square is the total surface area of a cube. इस पूरे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, सभी फेसेस के एरियाज का सम, इट इज 6L square. समझ में आ रहा है? बहुत इजी है. नेक्स्ट वी विल टेक अप द लैटरल सरफेस एरिया, और लैटरल सरफेस एरिया के केस में हम कंसिडर करते हैं ओनली द साइड फेसेस, और ऐसे में हम ये टॉप और बॉटम फेस कंसिडर नहीं करेंगे. इन केस ऑफ लैटरल सरफेस एरिया वी विल बी टेकिंग अप ओनली द साइड फेसेस, दीज 4 फेसेस, एंड अगेन द एरियाज आर L square, L square, L square, L square. Each face has the area L square. और ऐसे में लैटरल सरफेस एरिया आपका क्या हो जाएगा? It will be total area of 4 side walls or 4 side faces, and so it will be equal to 4L square. 4 टाइम्स लिखेंगे, उससे बेहतर है 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. सो इट इज़ इक्वल टू 4L स्क्वायर. और अब इन दोनों फॉर्मूले को हम एक साथ यहाँ पर देख सकते हैं. कंसिडर क्यूब ऑफ साइड L and total surface area of a cube, it is given by 6L square, and lateral surface area of a cube is given by 4L square. This is important. याद होने चाहिए ये सभी रेड शेप में, रेड कलर में इंडिकेटेड फॉर्मूले, ये इंपॉर्टेंट हैं और इसीलिए इनको हाईलाइट किया गया है. इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए. ये आगे चलकर आपके बहुत काम आने वाले हैं, ना सिर्फ क्लास 8 में बल्कि हायर क्लासेस में भी. तो अच्छी तरह से समझ लीजिए ये फॉर्मूले कैसे आए और फिर इनको याद भी करना है. गेटिंग इट? नेक्स्ट वी टेक अप हियर अ क्वेश्चन फॉर यू. जस्ट पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व दिस एंड देन कम बैक टू मी. Find the surface area of cube A and lateral surface area of cube B. टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है हमें क्यूब A का. ठीक है, सरफेस एरिया यहाँ पर टोटल या लैटरल ऐसा मेंशन नहीं है, तो जब भी मेंशन नहीं होगा इसका मतलब है हम वहाँ पर टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे. सो क्यूब A यू कैन सी दिस वन, इसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. सो वी राइट हियर टोटल सरफेस एरिया, indicate it as TSA of cube A. What is the formula? Yes, it is 6L square. And here you can see the side is 10 centimeters. So 6 into 10 square. 6 into 10 square means multiply 10 by 10 2 times. And now this will be 600. And what will be the unit? Yes, it will be centimeter square. With this we have found the total surface area of cube A. Next we have to find the lateral surface area of cube B. For this we will be using the formula. Let me write it in short. LSA of cube B. This will be 4L square. Learn it. And now here 4 into the side is 8 centimeters. So L square, it will be replaced by 8 square. This means 4 into multiply 8 by 8 2 times. This will now be equal to 4 into 64. 8 8 is 64. This will be 4 4 is 16, 1 carried, 256, and again the unit will be centimeter square. With this we have solved this question. Our next shape is cylinder, and here it is. Every day we see around many objects which are cylindrical in shape. Gas cylinder, circular pencil, water pipes, our water bottle. You must be using a cylindrical water bottle. All these shapes are cylindrical and we call them as cylinders. You can see this is one cylinder with us also. Here what are important things related to a cylinder? We read them one by one. A cylinder has two congruent circular faces. Two congruent circular faces that are parallel to each other. यहाँ पर देखिए आप,
सर्कुलर फेसेस हैं, यहाँ टॉप पर एक सर्कुलर फेस है और ऐसे ही आप इमेजिन कर सकते हैं अपने पास कोई अगर चीज़ है जो सिलिंड्रिकल है उसको लेकर बैठी अपने पास, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बॉटम फेस भी सर्कुलर है और ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब बिल्कुल एक जैसे, आइडेंटिकल, उनका रेडियस एग्जैक्टली इक्वल होगा। जो टॉप फेस है और बॉटम फेस है वो सर्कुलर होंगे, उनके रेडियाई एग्जैक्टली सेम होंगे। गेटिंग इट? एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर, एग्जैक्टली सेम है, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो भी सेम होगा एवरी टाइम दे आर पैरेलल। देन द सर्कुलर एंड ऑन विच द सिलेंडर रेस्ट्स इज कॉल्ड इट्स बेस। जिस फेस पर ये सिलेंडर रेस्ट करता है उसे हम कहते हैं बेस। गेटिंग इट? दिस इज कॉल्ड द बेस ऑफ द सिलेंडर, दिस वन जिस पर ये रेस्ट कर रहा है। द लेंथ बिटवीन द टू एंड्स इज कॉल्ड द length or the height of the cylinder. Let me take it here so that you can visualize. The length between the two ends is called the length or the height of the cylinder. ये देखिए, ये जो दो फेसेस हैं टॉप और बॉटम पर, इनके बीच में ये जो लेंथ है this one, इसे हम कहते हैं लेंथ और the height of the cylinder. This is called the length or the height of the cylinder. I hope everything is clear here. ये हैं दो circular faces at the top and the bottom, and these are exactly identical. Their radii are equal. Then the length between these two faces, it is called the height of the cylinder, and we have this face at which this cylinder rests. It is known as the base of the cylinder. ये clear है? Next we take the line segment joining the center of circular faces is perpendicular to the base. Such cylinders are known as right circular cylinders. अगर हम यहाँ पर join करें centers को, एक बार join करते हैं, चलिए। We join the centers of the two faces, one at the top and one at the bottom. इनके centers को अगर हम इस तरह से join करें तो आप क्या देखते हैं? इट इज़ परपेंडिकुलर टू द बेस। ये जो बेस है इससे ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पर बेस के साथ। दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मीन्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, एंड सच सिलेंडर्स आर नोन एज राइट सर्कुलर सिलेंडर्स। राइट मतलब ये एंगल 90 डिग्री है और टॉप और बॉटम पे सर्कल्स हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अगर हमारे पास एक सिलेंडर कुछ इस तरह से हो, लेट मी मेक सम स्पेस, if we take one cylinder in this form, in this way, then will this be a right circular cylinder? अगर आप यहाँ पर इनके सेंटर पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये परपेंडिकुलर नहीं है बेस के साथ, ये एंगल 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है। सो दिस इज़ नॉट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसी तरह से अगर हम एक फिगर ऐसा कंसिडर करें, दिस वन एंड देन दिस वन, और अगर हम इनको ज्वाइन करें तो क्या ये एक सिलेंडर है? Obviously not. Why? Because the top and the bottom faces are not identical. They are not congruent. ये top और bottom face ये exactly same नहीं है, और ऐसे केस में again this is not a cylinder. So be clear in your mind what is meant by a cylinder. And you can see here we have one cylinder with us. This now is the curved part, this one. And circular base and top are identical. आप देख लीजिए ये जो ऊपर टॉप है और ये बॉटम है ये exactly identical है। तो अभी हमने जो केस यहाँ पर डिस्कस किया था, एक फिगर जहाँ पर टॉप और बॉटम फेसेस आइडेंटिकल नहीं थे, वो सिलेंडर नहीं था। क्यों नहीं था? दिस इज़ द रीज़न, एंड हियर यू कैन सी दिस इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ, कर्व्ड सरफेस। अगर आप अपनी वाटर बॉटल लें जो सिलेंड्रिकल हो तो आप देखेंगे कि जो बीच का पोर्शन है वो इस तरह से कर्व्ड है, राउंडेड है, and so this rounded portion is called the curved surface of the cylinder. One curved surface and two circular faces which are identical, they form a cylinder. तो cylinder में दो खास बात क्या है? एक तो है curved surface जो rounded shape है बीच में, और फिर हमारे पास है top और bottom पर identical circular faces. This is what has been said here. I hope it's clear. Now we will find the surface area of a cylinder. We have this one cylinder with us. We are taking the radius of base as r units and the height as h units. This has been shown here.
Now we are interested to find the curved surface area of a cylinder. Curved का मतलब हम समझ ही चुके हैं, जो राउंडेड पार्ट है सेंटर में, इस तरह से आप समझ सकते हैं, ऊपर और नीचे तो सर्कुलर पार्ट है और बीच में राउंडेड पार्ट है, उसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. इफ़ वी कट अलोंग द लेंथ of the cylinder and then we cut it and then we separate the top and the bottom faces also, then this part, it turns out to be a rectangle. And what will be the breadth of this rectangle? It will be equal to the height of this cylinder. अगर हम यहाँ पर सिलेंडर को बीच में से लेंथ के अलोंग कट करें तो खोलने पर ये एक रेक्टेंगल बनेगा जिसकी ब्रेड्थ क्या होगी, इसी सिलेंडर की हाइट के इक्वल होगी. जस्ट हैव अ लुक, दिस विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर. और अब इस रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी? इट विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कुलर टॉप. आप देखिए यहाँ पर जो सर्कुलर टॉप है, जैसे ही हमने इसको कट किया तो जो ये ऊपर सर्कमफ्रेंस थी सर्कुलर पार्ट की, वो अब स्ट्रेट हो गई, एक लाइन बन गई, और जो सर्कमफ्रेंस है वो ही अब लेंथ बन गई इस रेक्टेंगल की. इट इज़ इक्वल टू 2 pi r. Let us visualize it with the help of one paper. We take this cylinder. You can see it has one circular end here and one circular end here. You can see this is a cylinder. Now if we cut along the length of this cylinder, इस सिलेंडर की जो हाइट है उसके अलोंग इसको कट करें तो देखिए कट करते ही ये खुल जाएगा और इस तरह से ये तो बन जाएगा एक रेक्टेंगल. जस्ट विजुअलाइज इट, दिस इज द रेक्टेंगल. नाउ द ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द सिलेंडर. आप अज्यूम करिए कि ये इस तरह से अटैच्ड था, तब ये क्या है, हाइट है, सिलेंडर की हाइट है, और जब हमने इसको ओपन अप किया तो ये इसकी ब्रेड्थ बन गई रेक्टेंगल की. नाउ इफ़ वी अगेन फोल्ड इट अप एंड जस्ट विजुअलाइज द सर्कुलर एंड, इसको विजुअलाइज कीजिए आप, तो यहाँ पर ये जो पार्ट है दिस वन, it is the circumference of the circular end, and now as we open it up it turns out to be the length of the rectangle, and so the length of the rectangle is nothing but the circumference of the circular top or the circular base, whatever you can take. And what is the circumference of a circle? It is 2 pi r, and so we have here 2 pi r as the length of this rectangle and h is the breadth of this rectangle. और जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं तो ये जो राउंडेड पार्ट है सिलेंडर के केस में, दिस वन, ये जो राउंडेड आप पार्ट देख रहे हैं इसी को हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया. टॉप और बॉटम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ये राउंडेड पार्ट ले रहे हैं, इसी को हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं, या कह सकते हैं लैटरल सरफेस एरिया, क्योंकि यहाँ हम टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं कर रहे. सो दिस कैन ऑल्सो बी सेड टू बी द लैटरल सरफेस एरिया of the cylinder. I hope it's clear. Next, when we will take up this curved part also and this top and bottom also, then we will call it as the total surface area of the cylinder. जब हम इस curved part के साथ, ये जो curved part है उसके साथ top और bottom faces के एरिया भी कंसिडर करेंगे, तब हम कहेंगे total surface area of cylinder. Right now we are talking about the curved surface area of the cylinder. I hope it's clear. Now what will be the area of this rectangular part? It will be length into breadth. The length is taken as 2 pi r and the breadth here is denoted by h. So the area of this rectangle will be 2 pi r h, and this rectangle indicates the curved surface area of this cylinder. इसी सिलेंडर का ये curved surface area ही तो है, और यहाँ से हमें मिल रहा है curved surface area of a cylinder. It is given by 2 pi r h. So here we can now write the formula. The lateral or the curved surface area of a cylinder, it is equal to 2 pi r h, where pi is 22 by 7, or we take it as 3.14 depending on the question. We will be taking up questions and then it will be very much clear. We usually take pi equal to 22 by 7. And now we will talk about the total surface area of a cylinder. Total surface area के लिए हम curved part भी consider करेंगे और टॉप और बॉटम पर जो सर्कुलर एंड्स हैं उनको भी कंसिडर करेंगे. द टोटल सरफेस एरिया, इट विल इंक्लूड द कर्व्ड सरफेस एरिया, ये भी लेंगे हम, प्लस एरिया ऑफ टॉप, सर्कुलर फेस, प्लस एरिया ऑफ बॉटम सर्कुलर फेस. हम ये सभी फेसेस
का एरिया कंसिडर करेंगे कब? टोटल सरफेस एरिया के केस में। और अब आप देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया तो हमें पता है 2 पाई आर एच होता ही है, प्लस एरिया ऑफ टॉप सर्कुलर फेस, सर्कल का एरिया क्या होता है? इट इज़ पाई आर स्क्वायर। हमने रेडियस आर लिया है, तो जब हम यहाँ पर सर्कुलर फेस ले रहे हैं तो इसका एरिया क्या होगा? इफ़ वी टेक द रेडियस इज आर, it will be pi r square, and then area of the bottom circular face, it will again be pi r square. इसको हम लिख सकते हैं 2 pi r h plus, since pi r square is coming up 2 times, so we write it here 2 pi r square. Now here we see 2 pi and 2 pi, it is common, again r is common, r here also and here also, so we can take 2 pi r outside as common, and what is left? 2 पाई आर तो बाहर चला गया, अंदर आएगा h प्लस यहाँ से आर स्क्वायर में से एक आर तो बाहर और एक आर आ गया अंदर, एंड विद दिस वी गेट द फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ cuboid cylinder. With this we get the total surface area of a cylinder. तो यहाँ पर दो important formulae हैं. One is this one to find the curved surface area of a cylinder, it is 2 pi r h, and this one is to find the total surface area of a cylinder. We write them here together. We have the lateral or curved surface area of a cylinder is 2 pi r h, and the total surface area is given by 2 pi r into r plus h. Remember, we take pi to be 22 by 7 unless otherwise stated in the question. And one thing more that is important, the lateral or curved surface area of a cylinder, it is equal to the circumference of base into height of cylinder. यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला है 2 pi r into h. अब circumference क्या होती है? 2 pi r और height है h. So it is the same formula 2 pi r into h. तो इसी फॉर्मूला को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं circumference of base into height of cylinder. अगर हमारे पास एक cylindrical object है और अगर हम उसको ड्रॉ करें, लेट मी मेक सम स्पेस. In this way, if we draw a cylinder, then what we see that the circumference of this base, ये जो outline है base की, it is 2 pi r, और जब हम इसको height से multiply करें तो यहाँ से हमें मिलेगा curved surface area. तो ये एक और formula है to find the lateral surface area of a cylinder. I hope it's clear. Next we will be doing one problem based on this. Find the total surface area of this cylinder. We can see here the radius r, it is 14 centimeters, and height h, it is 8 centimeters, and we have to find the total surface area. So we can write here in short total surface area of cylinder. चलिए बताइए फॉर्मूला क्या है? It is given by 2 pi r into h plus r. बस अब ये वैल्यूज प्लेस इन कर लीजिए. 2 into 22 by 7, r is here 14 into h is 8 plus again 14. Cancel this 14 by 7. It will go 2 times. So we have 2 into 22 into 2. Here we have 14 plus 8. 8 and 4, 12, and 1, it will be 22. Now can we cancel this 14 by 7? क्या हम इस 14 को जो यहाँ पर प्लस हो रहा है 8 के साथ, क्या इसको 7 से यहाँ पर कैंसिल कर सकते थे? Obviously not, क्योंकि यहाँ पर 14 8 के साथ प्लस हो रहा है, तो पहले तो हम प्लस करेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर है, उसके बाद जो नंबर आएगा अगर वो कैंसिल हो रहा होता तो हम करते. तो यहाँ पर क्योंकि 14 इंडिपेंडेंट नहीं है तो यहाँ 7 से कैंसिल नहीं होगा, ये प्लस में 8 के साथ है. द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. नाउ वी विल बी मल्टीप्लाइंग. It will be 2 2s are 4 into 22. It will be 88 into we have 22. Multiply 88 and 22. 2 8s are 16. 1 carried 176. Then 16 176. Here you will get 6. 7 and 6 13. 1 carried 7 8 9 and 1 9 3 6. With this we can remove this rough work. And now this will be in which unit? It will be in centimeter square. This is the total surface area of this given cylinder. So I hope how we got this formula, it is clear. The concept of curved surface area and the total surface area, it is clear in case of a cylinder,
and now you can easily learn the formulae and apply them. Remember, with this we now conclude and take up all the formulae that we learned today at one place. We have them here. We have cuboid, and the lateral or curved surface area, it is given by 2 into h into L plus B. Remember this, and the total surface area is 2 into LB plus BH plus HL. ये formulae याद होंगे तभी आप questions में apply कर पाएंगे. Remember, L denotes the length, B the breadth and H the height. In case of cube, the lateral surface area is given by 4L square and total surface area by 6L square, where L denotes the side of cube. And then in case of cylinder, we have the curved surface area as 2 pi RH and the total surface area as 2 pi R into H plus R. R denotes the radius of the base and H denotes the height of the cylinder. With this, we complete this segment. I hope all the formulae are very much clear, and by this time you have learnt them well. In our next video, we will do some examples, and then we will be taking up some questions from your coming exercises. Bye for now.